Hello everyone, I hope you all are doing well. So today I'm starting with MCO 01, Organizational Theory and Behavior. So our first unit is Organization Theory. So without wasting any time, I am starting with the Unit 1, Organization Theory. So this is purely based on the introduction. So let's start. So basically, when we talk about the organization theory, I am going to provide you all the notes which you are required to study for your exam, plus for your revision part. It will really be helpful for you to maintain. You can take the screenshot to revise it again. Otherwise, you can come back to the video and you can review it. So organization theory talks about the group of people, specific goals and individual prospects. How their contribution work, their achievement, loyalty, concern and interactive. Well, organizational objectives. It can be individual plus the overall part. If you have to take an example of a manager, the central role is to plan, strategize, coordination and goals. Then if you have to talk about organizational structure, it should be proper, process, motive and structure. Organizational structure or task continues in nature. Then there are two perspectives, macro and micro. So micro is about the individual part, macro is for organization as a whole unit. Micro is individual, that means it deals with individuals patiently and aggressively. When we talk about the macro part, it talks about the whole unit, goals, structures, technical, interaction with environment. For organizational behavior, discipline, organization theory. Now let's talk about the concept of organization according to Lewis A. Allen. Well, organization can be defined as the process of identifying and grouping to work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationships for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing object. So when we talk about the organization concept, this means कि जब organization का एक process होता है, वो identify करता है और group करता है work को कि कौन कितने अच्छे से work को perform कर सकता है, किस type का work किस person को देना चाहिए. That will totally depend on the capabilities. Therefore, the delegation is according to that work only. Authorities भी उसी तरीके से assign की जाती हैं और relationship इस तरीके से build किए जाते हैं of people to the work. Now let's talk about more points like that indicates the facts that are common for all organizations. So here are these. An organization always include persons. So हर organization में person होने बहुत ज़रूरी हैं. These persons are involved with one another in some way. हर एक पर्सन दूसरे पर्सन से इन्वॉल्व होता है बिकॉज आपको एक दूसरे को कभी असाइन करना है, कभी आपको उनको टारगेट अचीव करके दिखाना है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. The intersections among person can always be ordered or described by some sort of structure. So जो भी interactions होती हैं लोगों के बीच में आपस में, तो वो ordered भी हो सकती हैं, प्लस कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है कि आपको अपने बॉस को अपना वर्क दिखाना है या बॉस आपको प्लस और वर्कर्स को वर्क के लिए असाइन करेंगे. सो दिस इज़ हाउ यू गाइज इंटरेक्ट विद वन अनदर. Let's talk about the another fact, that is each person in organization tries to meet personal objective. तो हर एक person अपना एक personal objective को भी achieve करने का try करता है through the organizational activities. So the last point talks about these interactions can also help to achieve compatibility joint objective, organizational objective and personal objective. तो ये interactions जो होती हैं ये organizational objective को भी help करती हैं और personal objectives को भी achieve करने में help करती हैं. Let's talk about the features of organization. ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि एक फ़ोन का फीचर हो सकता है कि फ़ोन में कैमरा होता है, फ़ोन में स्पीकर होता है, फ़ोन में देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स दैट वी कैन डू. द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन की फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं. सो आइडेंटिफाइबल एग्रीगेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स नॉट टेकन रैंडमली. सो ह्यूमन बींग्स वहाँ रैंडमली आपको नहीं मिलते, इट विल बी असाइंड द वर्क. हर एक ह्यूमन को कुछ वर्क असाइन किया जाता है. उसके बाद डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस क्रिएशन, प्रॉपर तरीके से एक मोटिव लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड किए जाते हैं जिसके थ्रू वो लोगों को अपॉइंट करते हैं और उनको वर्क असाइन करते हैं.
देन इट्स अबाउट द पर्पसिव क्रिएशन. ऐसे कोई भी उठ के अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना लेता. देर इज सम पर्पस बिहाइंड दैट, डेफिनेटली टू अर्न प्रॉफिट. बट उस प्रॉफिट को अर्न कैसे करना है, किस वे से करना है, सो वो सब चीज़ें क्रिएट की जाती हैं. कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़. एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा एक्टिविटीज़ लाइक सेल्स परचेज के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सो देयर विल बी एन इशू लेटर ऑन. रिसोर्सेज में भी प्रॉब्लम हो सकती है. अगर आपको ऑब्जेक्टिव को अपने अचीव करना है, सो फॉर दैट यू हैव टू coordinate with one another. Then it's about the structure, because structure भी बहुत ज़्यादा important होता है. तो सी structure जो है हमारा features में भी count हो रहा है और concept में भी count हो रहा था. So ये overall हर चीज़ में almost use हो रहा है. So try to use this part in almost every perspective. Let's talk about the importance of organization. So establishing the relationship among the various persons. So अगर हम बात करें वर्कर टू वर्कर या वर्कर टू मैनेजर, मैनेजर टू वर्कर या मैनेजर टू मैनेजर, तो ये सब जो है ये रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं. यही हमने पहले पढ़ा था. एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑफर करती है एडवांटेजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोसाइटी. ऑर्गेनाइजेशन का तो प्रॉफिट होता ही है, सोसाइटी के लिए भी वो कुछ अच्छा वर्क कर पाते हैं. सो दैट इज़ समथिंग कॉल्ड एज एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन. नाउ लेट्स मूविंग फर्दर. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो अच्छे से यूटिलाइज हो पाते हैं. इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. फैसिलिटीज़ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जो इफेक्टिव मतलब कि मैनेजमेंट अच्छे से इफेक्टिवली वर्क कर सके उसके लिए उसको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती हैं. मोटिवेट पर्सनल, दैट इज़ द स्टाफ को मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है. देन इज फैसिलिटेट्स द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. जो आप अथॉरिटी किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, किसी को दे रहे हो, दैट शुड बी about the capabilities of that particular person. Let's move further. Let's talk about the management part. Management is a body of knowledge, कि वो एक knowledgeable body है. फॉर्मल टीचिंग होती है, नॉलेज प्रॉपर नॉलेज उसके अंदर चाहिए होती है. रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एसोसिएट्स what they do, representative associations and body of members in the field of management. Ethical standards of conduct enforced by the profession. Provision of suitable remuneration to the members in the service of management. तो अगर शॉर्ट में बात करें तो मैनेजमेंट जो है वो एक बॉडी ऑफ नॉलेज है एंड इसके थ्रू आपकी जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैनेज की जाती हैं एंड बहुत ही एथिकल स्टैंडर्ड्स उनके नॉर्म्स होते हैं, उसके थ्रू वो अपने प्रोफेशन के अंदर वर्क करते हैं. प्लस उनके लिए प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, बिकॉज समहाउ स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही वो आगे वर्क परफॉर्म करते हैं. Let's talk about the levels of management. These are 3: top management, middle and the lower. So when we talk about the top, middle and lower, so here's a diagram for you. You can use it in your exam as well. So upper, middle and lower level. So for upper, there are long-term goals, markets, products, business and organizing. Jobs like CEO, CFO, COO, CTO, VP, marketing. तो जो upper level जो मतलब बहुत ही लॉन्ग टर्म गोल्स कह सकते हो आप, ठीक है. तो